Okay, so I was mentioning about कि Agora Agartala railway line would be passing through Bangladesh, and it would be connecting Northeast India with the state of West Bengal, and it would be like the location would be Kolkata. So we are focusing more upon कैसे connectivity projects Northeast India में and international cooperation के through we are promoting that. Then BBIN is one important organization or regional grouping that can play an important role. So this is there, and even we are promoting manufacturing sector growth in Northeast India, MSME sector growth. So we see nearly 7 lakh additional gig jobs they were created during this festive season. So important aspect is कि हम इस level को maintain कैसे करें. So this was because of the seasonal factor, festival factor. So last year around 5 lakh gig jobs they were created, and 10% more than the non-festival period hiring was also witnessed. And the surge was largely, it came from the e-commerce or the logistics companies. So consumer demand of the festive season has been more than what companies expected, and to care for that, they hired the contractual staff. So यहाँ पे again gig economy की हम बात करते हैं. So it is, you can see कि they were hired as a contractual staff. So till the time they were required, they were hired, and after that again job security is major problem. Plus जो amount of money or remuneration is also decided, that also it varies. So it is all on the basis of the difficulty of the task, the advancement, and the level of skills that is required. So social security, that is still not existing, and of late we have seen ki Rajasthan state has also passed a law for securing the rights of the gig workers. So definitely we need that at the national level also, because the way gig economy or the gig sector has been expanding, that is very huge. So regulation and its formalization is very important. सो आईटी इंजीनियरिंग फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं फ्रॉम द नॉन अमेरिकन रीजन्स. मतलब दे आर बेस्ड इन अमेरिका, बट when we talk about Tata Elxsi or Tata Technologies, they said कि major portions of their revenues they came from Europe and India. So ये दो इंडियन कंपनीज हो गई, टाटा फर्म्स हैं, बट इवन जो इंटरनेशनल है लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया या गूगल हो गया, इवन इन दैट केस दिस इज इंडिकेटिंग कि आउटफ्लो ऑफ जो प्रॉफिट्स है, जो मनी हो रहा है, या जिस तरीके से इवन गूगल इज फंक्शनिंग, वी हैव बीन सीइंग कि यूरोपियन यूनियन हैज आल्सो इम्पोज्ड stricter regulations when it comes to data safety or online jo their advertisement practices has been, that has been misguiding or that has been unfair. So how that is basically tricking people, they are just making profits and moving out. So यहाँ पे proper like regulation is needed, strict regulations like it is being done in European Union. So we've been talking about प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बहुत सारे सेक्टर्स के लिए दी जा रही है. सो डू वी ऑल्सो नीड इट फॉर द स्पेस सेक्टर ऑल्सो? Because even when we talk about from the perspective of internal security, so we talk about unconventional warfares. Mein one aspect is the space war also. So that is important, and then we are also promoting human space flights missions also, like Gaganyaan mission has been proposed. So from that perspective, private sector role कैसे important एक important role play कर सकता है. In this context we have been seeing कि Artemis Accords are there. Then I said जो India and US के बीच में advanced modern technological and emerging technologies के context में we have signed this agreement. And in space is again India का जो private space agency hai, that is there. So private investment in any sector, it will always be a product of market availability for the offerings and return on the investments. So even private sector again main motive ye rehta, private profit motive. So how that would be balanced with the security concerns that we have, even if we allow more private sector participation, yeah, even FDI in the space sector. So India's space policy 2023 that was also announced. So isme we have proper clarity to non-government entities in the segment. Real shot in the arm would be the government following it up with the much anticipated Space Activities Act and then FDI policy for the space sector. So let's see how this is going to be
there. New space. So new space has several layers and enablers over and above privatization also. So privatization of space sector, this is another area where we are still in the initial stages, and how this may be regulation kaise hoga, how this would be growing. Indian context mein there are at least 4 critical enablers. One is regulatory and policy environment, then private and public investments. Third is international collaborations and technology transfers, जिसमें अभी हमने ISET की भी बात करी. Fourth is actions of private and public enterprises that are being orchestrated for re-imaging the Indian space sector with the aim of fostering socio-economic development and the securing national interest. So यहाँ पे again security वाला aspect आ गया. And इंडिया का जो space economy है, that is going to be one of most valued at $44 billion 2023 तक. I would like to ask if we have to take one major point from Indian space policy, what would it be? In a single line. Self-reliance. Self-reliance, and again we are also promoting how space sector or space missions can be more efficient and cost effective at the same time, because relaunch vehicles pe bhi we are still working, so that is still a work in progress. So when we talk about the mindset of the people, specifically when we're buying cars, so earlier the mindset used to be, or behavioral when it comes to buying a car was कि कितना देती है, मतलब what was the mileage of the car. But today's time people have moved beyond that. So good fuel efficiency is one of the important factors when you're going for buying a car, and comfort features on the dashboard. Safety is important to talk about. Road accidents increasing and airbag safety. Then the car testing, crash facilities, their advancements in India may indigenously we are doing that. So that is important aspect. So that has become far more significant buying factors for the Indians. And again, self-reliance in this also, we've been promoting semiconductors, mission fab units we're setting up, so as to again reduce our dependence upon imports of semiconductors from China and Taiwan. And then again, green fuel, how we are promoting electric vehicles. So affordability of electric vehicles is right now a major concern. So fuel efficiency, so these are the important factors for the automobile industry. I think Mansi, we can take up Indian newspaper. So this is, we've taken up. So satellite portfolio क्या होता है? Make thematic funds a part of your satellite portfolio. So be ready to ride out multiple business cycles for higher returns. So thematic funds, they are a category mutual funds जो एक particular industry के ही collection of capital stocks होते हैं, या फिर companies, सिर्फ suppose automobile industry के companies का पूरा एक fund होगा, या फिर IT companies का fund होगा, so उनको हम बोलते हैं thematic funds. So they focus on a specific theme or sector, but वहाँ पे थोड़ा सा risk भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो nature of performance रहता है कहीं ना कहीं similar रहता है एक particular set of like industry की, अगर एक ही industry की हम बात करें. So unlike the diversified equity funds that invest across various sectors, thematic funds are designed to capitalize on the emerging trends, ideas and industries. So who should invest in thematic funds? So this is not important. We are looking for satellite portfolio क्या होता है, तो funds that can be a part of an investor satellite portfolio, not the core one. So thematic funds, they're very high risk category. On the riskometer, it's imperative to note down all the thematic funds. They will effectively profit from the growth of the targeted trend, making it more critical. Okay.
So we'll have to specifically look what are actually satellite portfolios. मतलब these are what I can make out is जो और आने वाले emerging areas हैं वहाँ पे diversified companies का एक पूरा fund होना, making a fund out of that would be what we'll be calling a satellite portfolio. जहाँ पे मानसी, सैटेलाइट पोर्टफोलियो probability of the fund to faces volatility relatively high. Okay, औशिक क्या कह रहे हो? satellite portfolio are investment that focuses on opportunity with high risk and high reward potential. एक लाइन में समझा दो। ठीक है। हाँ, तो मतलब कि जो इसमें लिखा हुआ है कि थीमेटिक फंड्स का एक एस्पेक्ट हो सकता है। थीमेटिक फंड्स एक स्ट्रेटजिक एडिशन हो सकते हो टू योर पोर्टफोलियो, तो इट कैन बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर एंटायर इन्वेस्टमेंट। सो दिस और इज स्पेसशिप प्रेफरेबल पोर्टफोलियो भी फॉर होता है। द हाई रिस्क इन्वेस्टर्स। स्पेसशिप बेसिकली वो होता है जिसमें आप डाइवर्सिफाई करते हो अपना इनकम और इन्वेस्टमेंट, और आप ऐसा करते हो ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहे। लेकिन सैटेलाइट मतलब जो भेजता है ऊपर, मतलब कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्डिंग है। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू औशिक फॉर द एडिशन। ओके, नाउ विल मूव टू द हिंदी न्यूज़पेपर। So Divya, start. Okay. So ये ले सकते हो। चुके हैं मानसी कि 2+2 डायलॉग भारत और बिटवीन ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी मेनी होता है कंट्रीज, अभी हम, हाँ, भारत ऑस्ट्रेलिया, और जापान, यूएस। हाँ, भारत ये कर समेत सकते 7 हैं देशों भारत। में हर साल 13 लाख लोगों को कैंसर से मौत। इसमें ये देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑफ कैंसर है, उन्होंने बताया है कि हर साल दुनिया में 2 मिनट में गर्भ कैंसर के कारण एक महिला की मौत होती है। 90% मौतों में मध्यम आय वर्ग के देश होते हैं, मतलब जिनकी आय बहुत कम है और फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उनकी होती है। अगर पुरुषों में, भारत में हम पुरुषों में देखें तो सिर में और गर्दन के कैंसर कारण होता है, और फीमेल्स में रोग संबंधित कैंसर से उनकी मौत होती है, जिनके कारण है तंबाकू, धूम्रपान, जिससे फेफड़े के कैंसर होते हैं, लंग्स कैंसर। इन पर रोकथाम लगाई जा सकती है जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा एचपीवी को रोका जा सकता है। ह्यूमन पोपुलोमा वायरस है जो कि 20 लाख लोगों की जान चली गई है, जिसके कारण। हाँ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे हैव टू मेक चेंजेस इन लाइफस्टाइल। उन चीजों की वजह से हो रही है जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। मॉनिटरिंग और राइट सब्सिडी देना चाहिए। अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। धूम्रपान और शराब तो कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से ही रोक सकता है, उसके लिए इसमें देख सकते हैं लाखों आवेदन। फिर देख सकते हैं जलावन की लकड़ी कौन सी लकड़ी होती है, हिमाचल प्रदेश में मिलती है। ट्राइबल्स के लिए 805 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिसमें 500 रुपये की सब्सिडी दी गई है, ताकि उन्हें जो ठंड के मौसम आ रहा है अभी, उसमें उनको हेल्प मिल सके। जलाऊ लकड़ी है, जलाने के लिए काम आती है जनजातीय लोगों को। ठीक है। यह आंगनवाड़ी बनाई जा रही है जिसमें 5 करोड़ 88 लाख रुपए दिए गए हैं। जो आंगनवाड़ी कुछ तो निजी भवनों में चलाई जाती है और कुछ के लिए प्राइमरी केंद्रीय स्कूल खोले जाएंगे। पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड उत्तराखंड में बात की थी कि वहां पर पैराग्लाइडिंग रिलेटेड चीजें चल रही थी।
स्टील ट्रस्ट। कौन सा आर्टिकल कह रहे हो? नीचे तो मैं स्क्रॉल करना, यहाँ पर व्यास नदी के ऊपर पुल बन रहा है जिसमें स्टील ट्रस तकनीक का यूज किया जा रहा है इस पुल को बनाने के लिए। ये वाला व्यास नदी पर पुल बना रहे हैं, इसमें स्टील ट्रस तकनीक का यूज किया जा रहा है, 20 करोड़ रुपए में इसकी लागत होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, कुमार स्वामी ने बिजली चोरी में, जो कि पूर्व सीएम है कर्नाटका के, उन उन्होंने अवैध तार जोड़कर चोरी की और उसके ऊपर उनको जुर्माना लगाया 68,556 रुपए। पूर्व सीएम होकर बिजली चोरी कर दी। अगर लोग छोटी छोटी नादानियां नहीं करते तो कभी बड़ा बुद्धिमत्ता वाला काम नहीं हो सकता। हाँ, डायरेक्ट इसमें मतलब एग्जाम्पल्स ही हम बता सकते हैं, मतलब चंद्रयान मिस्टेक से यहाँ का बड़े आविष्कार हुए हैं। ये पोंजी स्कीम के बारे में भी ले सकते हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर है, इसको हम डिटेल में लेंगे वंस वी हैव द जजमेंट। या इन्होंने इंटरनेट मुफ्त देने का वादा किया है। I think we have finished, Mansi. रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स। ठीक है दिव्या, क्लोज कर दो आज का सेशन। आप कंक्लूड नहीं करोगे? अच्छा, पहले वो कर देते हैं। औशिक, ठीक है, मैं कर देता हूँ, शॉर्ट में कर देता हूँ हम्म, अपना वाला, फिर आप भी कर दो एक एक मिनट में। ठीक है। First of all, starting from first, we have discussed how the disaster management data can be utilized and monitored. For example, like we use digital stack, health stack, agri stack, we can use disaster stack to include all the disaster management methods that can be applied with regarding to the Uttarkasi land subsidies. Secondly, is for the Israel-Palestine, we talked about how Iran factors their wider conflict, words like re-regionalization of the Palestine issue, use of Houthi rebels from Yemen and Hezbollah from Lebanon. Then economic slowdown of China we discussed about, where China uses state capitalism and how there is a economic slowdown with respect to the increase in the cost of raw materials and also the decrease of the population in Chinese. And with regarding to the India, how India is dependent on China in various sectors such as API, medicine, 70%, and clean energy, silicon wafers. India imports around 90% of the silicon from China, and how the trade deficit is growing with China. Then regarding to opium, we discuss what are the policies, and we should include the private. Right now, the policy included the private bodies also, and opium is used for medicine purposes, and they are grown in MP, Rajasthan, and even in Northeast. And then regarding the role of the India in clean energy, तो several roles है, climate financing में role है, global biofuel alliance
And we discussed about the various types of hydrogen, such as green hydrogen, blue hydrogen, and gray hydrogen. Green hydrogen is made from renewable source of energy. Blue hydrogen, where carbon capturation is there. Then gray hydrogen is where coal is used for production of the for the production of the hydrogen. Then we talked about the defect, how it impacts the society and how it creates division if not regulated properly. And how can it be regulated? First is display of the deepfake message near to the image, and second would be uh, some fact check mechanism should be there, maybe from the social media or maybe from the government, etc. So lastly we discussed about technical textile and various other areas where it is used, for example medical, uh, health, then sports, infrastructure, engineering, etc. So Mansi, you can conclude. Okay, so firstly, we Okay. talked about the voice of Global South. So Global South की demands क्या है? Firstly, they are asking for UN reforms, their proportionate representation in United Nations, then their leadership role can play an important role. So acknowledging their leadership role. Thirdly, Global South energy security पे भी एक important role play कर सकता है in terms of also renewable energy transition or green energy transition. Then we talked about रशिया से जो imports हो रहे हैं, रशिया के ऊपर sanctions लगाए गए यूएसए के द्वारा रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, बट स्टिल इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया डिस्काउंटेड प्राइसेस के बावजूद, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट को प्राइमेसी देता है व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन पॉलिसी. सो दैट इज नॉट इम्पैक्टेड इंडिया यूएस रिलेशनशिप. एंड इवन जो सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर इतना उसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ. ऑल्दो स्विफ्ट सिस्टम से भी रशिया को बैन कर दिया गया, बट स्टिल उसकी वजह से वी हैव सीन the outburst of Cyprus as a financial shadow zone of Russia. So we've come to know about कि कैसे money laundering हो रही थी major scale पे. Apart from this, we talked about engineers' contribution in the army, their important role in terms of modernization, in terms of self-reliance, in terms of more security resilience. Then defense air show. This is again tomorrow we have the final for the World Cup T20, the ODI World Cup, but here defense show signifies the soft power of India. And then digital divide को bridge करने के लिए what can be done. So we talked about कि एकलव्य स्कूल मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल्स है ट्राइबल एरियाज में बनाए जा रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनकॉर्पोरेटिंग दिस एस्पेक्ट, एंड पीएम श्री स्कूल्स में हम टेक्नोलॉजी को और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. And then tribal land ki we saw in the context of Odisha, so tribal land would not be sold to the non-tribals. So यहाँ पे basically fair pricing mechanism होना चाहिए of the land in order to bring more transparency in this mechanism. We talked about measles, एक viral infectious disease है जो कि communicable है, and vaccine के through इसको हम prevent भी कर सकते हैं. Then pollution की हम बात कर रहे थे कि merely speeches से या everyday just talking about is not going to be the solution for it. So parents के behavioral change के हमने majorly बात करी around the behavior. So carpooling या even the way children they are brought up. So उसमें उनके वो natural behavior में कैसे aspects imbibe हम कर सकते हैं वो important role play करेगा. उसमें डेफिनेटली स्कूल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. रेवडी कल्चर की हमने इन डिटेल बात करी. रेवडी कल्चर बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड की पर्पस क्या है. And one significant term that we learned today was new welfareism. So that's there, and essential, non-essential, maybe we can categorize it. So this was one aspect. Then in the context of governor, we saw Tamil Nadu governor, he returned almost 10 to 11 bills back to the state assembly. So herein we talked about ki governor ki accountability or increase kar sakte hain. He or she should provide in written the reasons of returning those bills. And governor constitutional machinery ke under he or she works under the aid and advice of the constitution, aid and advice of the council of ministers. So he's a constitutional machinery, so you can't go ultravise the constitution, and the discretionary powers are even they need to be basically used adequately. So constitutional machinery को आप break नहीं कर सकते हो. Apart from this, COP28 दुबई में होने वाला है. We discussed कि क्या important areas हो सकते हैं of discussion this time. So we talked about climate finance would be one. Renewable energy की जो installed capacity है उसको हम और कैसे increase कर सकते हैं. Loss and damage fund की हमने बात करी. It was announced in COP27, but उसको implement करने के लिए we need to take the next step. $100 billion per year was
अगेन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था, बट दैट वाज नॉट फुलफिल्ड इवन वंस. सो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? डेवलप्ड कंट्रीज को देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज दे हैव टू रियलाइज दैट. एंड इंडिया बात करता है फेज डाउन की, इवन जो कोल थर्मल पावर प्लांट्स है, सो वी टॉक अबाउट फेजिंग डाउन ग्रेजुअली. एंड फेज आउट भी एक एस्पेक्ट होता है. तो वी हैव द टारगेट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी 2070 तक अचीव करना, सो दैट वुड बी कमिंग अंडर फेज आउट. बट फेज डाउन वुड बी अ ग्रेजुअल और एक सस्टेनेबल अप्रोच है. Apart from this, we have also talked about railway sector में कि जो borrowings हैं, that is between the range of 40,000 crore rupees to 60,000 crore rupees. So instead of कि railways को borrow ना करना पड़े, so they would be completely financed by the government budget. And जो non-core businesses है, they can be leveraged to generate additional revenues for the railways. So these were some of the important areas that we discussed today. And thank you so much for joining us. Do subscribe to Ansarkari and stay tuned for everyday critical analysis with us.